Om Shanti. 11 जुलाई संस्कृत सत्र प्रातः क्लास. Today, there is the morning class of July 11th, 1967. बाप बैठ समझाते हैं. The father sits and explains. कौन सा बाप? Which father? सुप्रीम सोल बाप, जो आत्माओं का बाप है, वो बैठ समझाते हैं. और किसमें बैठ समझाते हैं? The Supreme Soul Father, who is the father of the souls, sits and explains. In whom does he sit and explain? प्रजापिता ब्रह्मा में बैठ समझाते हैं. He sits in Prajapita Brahma and explains. इस शरीर का मालिक आत्मा है. The soul is the master of this body. परमात्मा नहीं है. किस शरीर का मालिक? It is not the Supreme Soul. The master of which body? परमपिता परमात्मा इस शरीर का मालिक नहीं है. The Supreme Father, Supreme Soul, is not the master of this body. इस शरीर का मालिक कौन है? Who is the master of this body? जैसे अर्जुन का रथ गाया हुआ है. For example, the chariot of Arjuna is praised. तो रथ का मालिक कौन है? Who is the master of the body? A student is saying, the one who drives the chariot is the master. नहीं, वो तो सारथी होता है. No, he is the driver, sarthi. रथी. The charioteer? रथ का मालिक रथी होता है. The charioteer is the master of the chariot. तो ऐसे ही जिस शरीर में बैठ सुप्रीम सोल बाप समझाते हैं, वो शरीर का मालिक उस रथ का रथी है. In the same way, the master of the body, in which the Supreme Soul sits and explains, is the charioteer of that chariot. मेरे को अपना रथ नहीं है. I don't have my chariot. मैं उस शरीर का मालिक नहीं हूँ. ये कौन कहता है? I am not the master of that body. Who says this? सुप्रीम सोल बाप कहते हैं, मैं इस रथ का रथी नहीं हूँ, मालिक नहीं हूँ. The Supreme Soul Father says, I am not the charioteer of this chariot. I am not the master. इसका मालिक आत्मा है. The soul is its master. ये पहले समझना चाहिए. क्या? This should be understood first of all. What? जिस शरीर से बैठ समझाते हैं, उस शरीर का मालिक आत्मा है, परमपिता परमात्मा नहीं है. The soul is the master of the body in which he, meaning the Supreme Father, Supreme Soul, sits and explains. It isn't the Supreme Father, Supreme Soul. क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है इन बातों का. It's because now the children have received the knowledge of these matters. पहले तो ये समझना है कि हम आत्मा हैं. First of all, it should be understood that I am a soul. और हम आत्मा इस शरीर के मालिक हैं. And I, soul, am the master of this body. शरीर आत्मा का मालिक नहीं है. The body isn't the master of the soul. मालिक चैतन्य होगा या जड़ होगा? Will the master be living or will he be non-living? चैतन्य मालिक होता है. जड़त्व का भी मालिक होता है. The master is living. There is also the master for the non-living. और जो चैतन्य बच्चे पैदा होते हैं, उन चैतन्य बच्चों का भी मालिक है. And there is also the master of the living children who are born. रचना का मालिक है. The creation has a master. आत्मा अपने शरीर की रचना करती है. कैसे? The soul creates its body. How?
मनुष्य शरीर छोड़ता है, when a human being leaves the body, तो शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले ही आत्मा अपने गर्भ की रचना कर लेती है। already 4 months before leaving the body, the soul creates its fetus. 4 महीने पहले ही गर्भ तैयार हो जाता है। The fetus gets ready already 4 months before. पिंड तैयार हो जाता है। The body gets ready. लूला लंगड़ा पैदा होना होगा तो वैसा ही पैदा होगा। If one will have to be born maimed, crippled, he will be born like this. अंधा पैदा होना होगा तो वैसा ही पिंड तैयार हो जाएगा। If he will have to be born blind, the body will be prepared like this. तो 4 महीने पहले से ही वो रचना शुरू हो जाती है। Therefore, already 4 months earlier, the creation starts getting created. तो उस पिंड का मालिक कौन है? So, who is the master of that body? जो गर्भ में पिंड तैयार होता है, निर्जीव गर्भ पिंड, उसका मालिक कौन है? आत्मा। Who is the master of the body, which is prepared in the womb, the lifeless body in the womb, the soul? तो शरीर आत्मा का मालिक नहीं है। शरीर से आत्मा काम लेती है, पार्ट बजाती है। So the body is not the master of the soul. The soul gets work done through the body. It plays its role. ऐसे ऐसे ख्यालात कोई और को आते नहीं हैं। The thoughts like this don't occur to anyone else. औरों को ऐसे ख्यालात क्यों नहीं आते हैं? Why don't the thoughts like this occur to others? क्योंकि वो सब है देह अभिमानी और तुम हो आत्मा अभिमानी। It is because all of them are body conscious and you are soul conscious. यहाँ पर तो यही ख्याल में बिठाया जाता है कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। You are made to sit here with this thought. I am a soul. This is my body. और मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। And I am the progeny of the Supreme Father, Supreme Soul. आत्मा तो हूँ, लेकिन संतान किसकी हूँ? I am a soul, but whose progeny am I? परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। I am the progeny of the Supreme Father, Supreme Soul. तो रचना हूँ या रचयिता हूँ? So, am I a creator or am I a creation? रचना हूँ किसकी? I am a creation. Whose? परमपिता परमात्मा की। अच्छा, Of the Supreme Father, Supreme Soul. All right. परमपिता रचयिता बनता है। Does the Supreme Father become a creator? परमपिता अनादि है The Supreme Father is eternal. और आत्माएं भी अनादि है। And the souls are eternal too. तो रची जाती हैं। So, are they created? फिर आत्मा रचना कैसे? Then how is a soul a creation? कोई शरीर में प्रवेश करके आकर के आत्मा को अपना परिचय देते हैं। Having come and having entered into a body, he gives the soul its own introduction. आत्मा अपना परिचय समझती है, जानती है, पहले नहीं जानती थी। The soul understands its own introduction. It gets to know about it. It didn't know it before. रचयिता ने जब रचना रची तो रचना हुई। The creation took place when the Creator created the creation. उससे पहले रचना नहीं थी। The creation didn't exist before it. ऐसे नहीं कि आत्मा नहीं थी, आत्मा तो थी। It isn't like this that the soul didn't exist. The soul did exist. लेकिन आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं था। But
the soul didn't have the knowledge of its form. तो जब से अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ तब से कहेंगे कि आत्मा रचना है परमपिता परमात्मा की. So since it got to know its form, it will be said that the soul is the creation of the Supreme Father, Supreme Soul. तो बुद्धि में आता है कि मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ. So it comes to the intellect that I am the progeny of the Supreme Father, Supreme Soul. ये याद बार बार भूल जाती है. You repeatedly forget about remembering this. क्यों भूल जाती है? Why do you forget? क्योंकि 63 जन्म के संस्कार पड़े हुए हैं देह अभिमान में आने के. It is because the sanskars of coming into body consciousness of 63 births have remained. तो रील घूम रही है. So the reel is rotating. उस घूमती हुई रील में हम बार बार भूल जाते हैं. In the reel that rotates, we keep forgetting repeatedly. तो ये बात पहले पूरा याद करना चाहिए. Therefore, first of all, you should remember this completely. यात्रा पर जब जाते हैं When one goes on a pilgrimage, तो कहते हैं कि चलते ही रहो. they say, just keep on going. रुकना नहीं है. You shouldn't stop. तो जल्दी जल्दी मंजिल पूरी हो जाएगी. Then the destiny will be achieved quickly. तो तुमको भी याद की यात्रा पर चलते ही रहना है. So, you also have to keep on walking in the pilgrimage of remembrance. रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है. You mustn't stop. You mustn't stand still. माना याद में रहना है. Meaning you have to remain in remembrance. और ये याद ही नहीं करते हैं. And they don't remember at all. तो गोया के यात्रा पर नहीं है. So it is like they aren't in the pilgrimage. याद करते हैं तो यात्रा पर है. If they remember, they are in the pilgrimage. याद नहीं करते हैं तो यात्रा पर नहीं है. If they don't remember, they aren't in the pilgrimage. देह अभिमान आ जाता है. Body consciousness comes. और देह अभिमान में रहने से कुछ न कुछ विकर्म हो जाते हैं. And from remaining in body consciousness, some or other vices appear. ऐसे भी नहीं कि मनुष्य सदैव विकर्म ही करते रहते हैं. नहीं. It isn't like this either, that the human beings always keep performing only the vicious actions. No. सदैव विकर्म नहीं करते रहते. They don't always keep performing the vicious actions. माया जब हावी होती है तो विकर्म कराती है. When Maya dominates, she makes them perform the vicious actions. विकर्म नहीं भी करते हैं और याद भी नहीं करते हैं. Neither they perform the vicious actions, nor do they remember. कोई पाप कर्म भी नहीं होता और याद भी नहीं करते हैं तो क्या होता है? There isn't any sinful act, and they don't remember either. Then what happens? टाइम वेस्ट तो होता है. The time is wasted. कमाई तो नहीं करते हैं. They don't earn an income. कमाई बंद हो जाती है ना. The income is stopped, isn't it? तो इसमें जितना भी हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना चाहिए. So, as much as possible in the pilgrimage of remembrance, one shouldn't become slack. एकांत में बैठकर अपने साथ विचार सागर मंथन करके पॉइंट्स निकालनी होती है. Sitting alone, one has to pick out points to churn the ocean of thoughts with oneself. कितना समय हम बाबा की याद में रहते हैं? How much time do we remain in the remembrance of Baba? मीठी चीज की याद आती ही है ना. The sweet things are remembered, aren't they? कुमार को जब कन्या मिलती है तो उसकी याद बहुत मीठी हो जाती है. When a young man gets a young woman, he remembers her very sweetly. फिर कितने लव से उसे याद करते हैं.
Then he remembers her with such love. देह में लग जाता है. The love goes into the body. बच्चों को समझाया है It is explained to the children कि सभी मनुष्य मात्र एक दो को नुकसान ही करने वाले हैं. that all the human beings only cause damage to each other. एक बाप ही है जो आत्मा का परिचय देकर फायदा पहुंचाने वाला है. There is only one Father who brings benefit through the introduction of the soul. तो फायदे का काम करना चाहिए ना. So one should do the work of benefiting the others, shouldn't he? सिर्फ टीचरों की ही बाबा सराहना करते हैं. Baba praises only the teachers. कि उनमें कोई टीचर है बहुत अच्छे होते हैं. That some among them are very good teachers और कोई खराब भी होते हैं. and some are bad. नहीं तो टीचर्स माना ही मैनर्स सिखाने वाला. Or else the teacher means the one who teaches manners. जो रिलीजियस माइंडेड अच्छा स्वभाव वाला होता है उनकी फिर चलन भी अच्छी होती है. The behavior of the one who is religious minded and has a good nature will be good. कोई बाप होते हैं There are some fathers. आकर के घर में शराब आदि पीते हैं. They come home and drink alcohol and so on. तो बच्चों को भी संग का रंग लग जाता है. So the children also get colored by the company. तो मैनर्स का असर पड़ता है ना. The manners exert the influence, don't they? इसको कहा जाता है खराब शैतानी संग. It is called the bad devilish company. क्योंकि रावण राज्य है ना. It is because this is the kingdom of Ravan, isn't it? राम राज्य था तो जरूर. Certainly, the kingdom of Ram existed. परंतु वो कैसे था? But how was it? ये वंडरफुल बातें मीठे मीठे बच्चे तुम ही जानते हो. Only you, sweet children, know these wonderful topics. स्वीटर स्वीटेस्ट कहा जाता है. It is said, sweet, sweeter, the sweetest. तुम अनुभव करते हो कि बाप की याद में रहकर ही तुम पवित्र बनते हो. You experience that only by remaining in the remembrance of the Father you become pure और दूसरों को पवित्र बनाते हो. and you make the others pure. तुम्हारे वाइब्रेशन का असर दूसरों पर भी पड़ता है. Your vibrations exert an influence also on the others. संग का रंग तो लगता है ना. The color of the company affects, doesn't it? बाप पतित सृष्टि में आते हैं. The Father comes to the impure world. तो बाप को संग का रंग क्यों नहीं लगता? Then, why doesn't the color of the company have an effect on the Father? है? The student is saying, the Supreme Soul has entered. हाँ, बाप माने सुप्रीम सोल. Yes, the Father means the Supreme Soul. वो इस पतित सृष्टि में आते हैं. सारी दुनिया पतित है. He comes into this impure and degraded world. The entire world is impure and degraded. तो उनको संग का रंग क्यों नहीं लगता पतितों का? सबसे न्यारे. So why doesn't the color of the company of the impure have an effect on him? A student is saying he is the most detached. इस बात में न्यारे है. Detached in what? हैं? जनमन के चक्र में नहीं आते. Students are saying he doesn't enter into the cycle of birth and death. Doesn't he come into the cycle of birth and death? उनको देह नहीं है. He doesn't have a body. जिनको देह होती है Only those who have a body वो ही जनमन के चक्र में आते हैं. come into the cycle of birth and death. उसको देह नहीं है तो देह का संग का रंग भी नहीं लगता. He doesn't have a body. So the color of the company of the body doesn't have effect on him. तो हमें भी क्या करना चाहिए?
So what should we do? देह को भूल जाना चाहिए। हैं? देह को भूल जाना चाहिए। हाँ, देह को भूल जाना चाहिए। आत्म की स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो हमको भी संग का रंग नहीं लगेगा। The students are saying, forget the body. We should forget the body. Yes, we should forget the body. If we remain fixed in the spiritual stage, the color of the company won't have effect on us either. तो बोला ये देह जो है, इस स्मृति देह की जो देह अभिमानी बनाती है, इसी से सारा उजाड़ हो जाता है, आत्मा उजड़ जाती है। So it was said, this body, the memory of the body, which makes one body conscious, the entire devastation takes place just from this. The soul becomes devastated. बाप देखो कैसे पतित सृष्टि में आते हैं, और सृष्टि में तो मनुष्य ही रहते हैं। Look how the Father comes to the impure and degraded world, and only the human beings live in the world. जिस सृष्टि में आते हैं वहाँ कौन रहते हैं? Who lives in the world where he comes? मनुष्य ही रहते हैं। देवताएं तो उस सृष्टि में रहते नहीं जिस सृष्टि में बाप आते हैं। Only the human beings live there. The deities don't live in the world in which the Father comes. मनुष्यों को मन होता है। The human beings have the mind. मन के वाइब्रेशन भी होते हैं। The mind has also the vibrations. उन मन के वाइब्रेशंस का The vibrations of those minds जो सुप्रीम सोल बाप है उसके ऊपर असर नहीं पड़ता। don't exert an influence on the Supreme Soul Father. क्यों नहीं पड़ता? Why don't they exert an influence? क्योंकि शरीर में इंद्रियां होती हैं। It is because the body has the organs. इंद्रियों का मुखिया है मन। The chief of the organs is the mind. 10 इंद्रियां हैं। There are 10 organs. उन 10 इंद्रियों को चलाने वाला कौन है? मन। Who sets in motion these 10 organs? The mind. इंद्रियां कोई भी कार्य करें उसमें अगर मन न लगा हुआ हो, If the mind is not applied to whatever the organs do, तो इंद्रियों को कोई प्राप्ति, इंद्रियों के द्वारा कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। there can't be any gain through the organs. तो इंद्रियों में मन प्रधान हो जाता है। Therefore, the mind becomes the chief among the organs. और बाप आते हैं When the Father comes, तो उनको तो शरीर ही नहीं है जो इंद्रियां हो। he does not have a body to have the organs. न इंद्रियां हैं, न इंद्रियों को चलाने वाला मन है, वो तो असोचता है। Neither there are the organs, nor is there the mind which sets the organs in motion. He is beyond thinking. बाप क्या है? असोचता। What is the Father like? The one beyond thinking. असोचता है तो अकर्ता भी कहा जाता है। Since he is beyond thinking, he is also called the one beyond the actions. जिनको मन होता है वो संकल्प करते हैं। The one who has the mind creates thoughts. उनके संकल्प से सृष्टि रची जाती है। The world is created from their thoughts. ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। The world was created from the thoughts of Brahma. तो ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची जाती है, तो क्या ब्राह्मणों के संकल्प से सृष्टि नहीं रची जाती होगी? So, if the world is created from the thoughts of Brahma, won't the world be created from the thoughts of the Brahmins? ब्राह्मण फिर अपने संकल्प से अपनी सृष्टि रचते हैं। Then the Brahmins create their world from their thoughts. श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो श्रेष्ठ सृष्टि रची जाती है। दुष्ट संकल्प करते हैं तो दुख की सृष्टि रची जाती है। If they have the elevated thoughts, the elevated world is created. If they have the corrupted thoughts, the sorrowful world is created. हर आत्मा अपने सुख दुख का रचयिता स्वयं है। Each soul is
itself the creator of its own happiness and sorrow. ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान हमको सुख देता है, भगवान हमको दुख देता है, नहीं. It won't be said like this that God gives us happiness, God causes suffering to us. No. भगवान तो आकर के सिर्फ रास्ता बताते. God comes and shows the way. परिचय देते हैं आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि का. He introduces the soul, the supreme soul, the world. बाकी करते कुछ नहीं, ना अपने लिए करते हैं. And he doesn't do anything else. He doesn't do anything for himself either. अपने लिए कुछ करते हैं क्या? नहीं. Does he do anything for himself? No. तो सृष्टि में मनुष्य ही रहते हैं और जन्मई कोई सृष्टि थोड़े ही कहेंगे. So only the human beings live in the world, and the total flat won't be called the world. इस सारी सृष्टि पर जल ही जल हो जाए, कुछ भी न बचे. So that the entire world would become only water and nothing would remain. भारत खंड तो अविनाशी गाया हुआ है. The land of Bharat is praised as imperishable. अगर सारी ही सृष्टि जलमयी हो जाए, फिर तो भारत खंड भी न बचे. If the entire world were flooded, the land of Bharat wouldn't be saved either. भारत बचता है. Bharat is saved. और दूसरे धर्मखंड वो सब खलास हो जाते हैं. क्यों? And all the lands of the other religions are finished off. Why? बाप आया है भारत में. आप आया हुआ है तो सबको बचा लेना. Students are saying the Father has come. If the Father has come, then he should save everyone, right? सब धर्मखंडों को नहीं बचाता. He doesn't save the lands of all the religions. भारत खंड बचता है. The land of Bharat is saved. क्यों बचता है? Why is it saved? Students are saying because of purity. क्योंकि आदि से लेकर के अंत तक कोई न कोई आत्मा ऐसी है. It is because there is some such soul who from the beginning till the end पवित्रता की पावर से भारत की अखंडता को कायम रखती है. preserves forever the integrity of Bharat with the power of purity. अपवित्र आत्माएं भी हैं इस दुनिया में और पवित्र आत्माएं भी. In this world there are impure souls and there are pure souls as well. कोई आत्मा ऐसी पवित्र पार्ट बजाने वाली है कि आदि से लेकर के अंत तक विविचार में नहीं आती. Some soul plays such a role of purity that it doesn't become adulterated from the beginning till the end. ऐसे नहीं कि पतित नहीं बनती है. It's not like this that it doesn't become impure and degraded. पतित तो बनती है. It does become impure and degraded. लेकिन खासियत क्या है? But what is special about it? और आत्माओं के मुकाबले उस आत्मा में क्या खासियत होगी? What specialty will be there in that soul in comparison with other souls? एक पति सदा ब्रह्मचारी. A student is saying, one husband, always brahmachari. हाँ, एक के साथ पतित बनती है. Yes, it becomes impure and degraded with one. पतित तो बनना है, ये कायदा है. One has to become impure and degraded. This is a law. क्या? What? कोई भी आत्मा जो पावन है, Any soul which is pure ऐसे नहीं सदैव पावन बनी रहेगी. आत्मा है तो जन्म मरण के चक्र में आएगी. It isn't like this that it will remain pure forever. It is a soul, so it will enter into the cycle of birth and death. जन्म मरण के चक्र में आएगी माने देह धारण करेगी. It will enter into the cycle of birth and death means that it will take on a body.
देह धारण करेगी माने देह का संग का रंग लगेगा. It will take on a body, means that the color of the company of bodies will have an effect. वो तो सब ठीक है, पतित बनेगी, लेकिन That is all right. It will become impure and degraded, but पतित बनना अलग बात है और बेविचारी बनना अलग बात. to become impure and degraded is separate, and to become adulterated is separate. तो पतित तो बनती ही आत्मा. So the soul does become impure and degraded. आत्मा जैसे जैसे शरीर के देह के सुख भोगेगी तो नीचे गिरेगी. As the soul experiences the happiness of the body, it will fall down. सुख भोगने से आत्मा की शक्ति क्षीण होती है. The power of the soul decreases due to the experience of happiness. लेकिन एक क्षीणता ऐसी है कि तीव्र गति से क्षीणता होती है. But one type of decrease is such that it takes place with fast speed. जैसे For example, द्वापर युग शुरू होता है the Copper Age starts. तो कोई आत्मा ऐसी है जो द्वापर युग शुरू होते ही अति पतित बन जाती है. At that time, there is such a soul who becomes extremely impure and degraded right from the beginning of the Copper Age. और उसमें दूसरे धर्म की आत्माएं प्रवेश कर जाती है. And the soul of the other religion enters it. उसे कहते हैं ना भय का भूत होता है. Just like it is said, there is the evil spirit of fear. तो जिसके अंदर कमजोरी आती है उसी में भूतों का प्रवेश होता है. The evil spirit enters just that one in whom weakness appears. कमजोरी न हो If there is no weakness, तो भूत प्रवेश नहीं करेगा. the evil spirit will not enter. भय नहीं आवेगा. The fear will not arise. तो So, द्वापर युग के आदि से ही ऐसी कौन सी आत्माएं हैं who are such souls right from the beginning of the Copper Age? इस्लाम धर्म की आत्माएं हैं. Students are saying the souls of Islam. It is the soul of the Islam religion. जो संगम युग में बाप जब आते हैं तो बताते हैं कि ये व्यभिचार के दोष से दूर रहना है. क्या? When the Father comes in the Confluence Age, he says, one must stay away from this sinfulness of adultery. What? कोई का संग का रंग नहीं लेना, एक बाप को याद करना. वो क्या करती है? One mustn't be affected by any color of the company. One has to remember the one Father. What do they do? वो एक बाप को याद तो करती हैं, विकारों को तो स्थूल रूप में छोड़ती हैं, लेकिन फिर दृष्टि का विकार नहीं छोड़ पाती. They do remember the one Father. They renounce the vices in the gross form, but they can't renounce the vice of drishti. दृष्टि से बेविचारी बन पड़ती है. They become adulterated through the drishti. तो संगम युग में ही अगर दृष्टि से बेविचारी बन पड़ी तो उनका फाउंडेशन स्वर्ग का कैसा पड़ेगा? So, if they became adulterated through the drishti in the Confluence Age itself, then how will be the foundation of paradise laid? तीव्र गति से नीचे गिरने का पड़ेगा या स्थायी रहेंगी? Will it be of falling down with fast speed, or will they remain stable? तीव्र गति से वो सतयुग में भी नीचे गिरती है. Students are saying of falling down. They fall down with fast speed even in the Golden Age. त्रेता में भी नीचे गिरती है. They fall down in the Silver Age as well. और गिरते गिरते द्वापर शुरू होते ही वो इतनी पतित हो जाती है, इतनी कमजोर हो जाती है कि जो भी आत्माएं ऊपर से आती हैं और उनको ऑक्युपाई कर लेती हैं. They keep falling down, and just when the Copper Age starts, they become so impure and degraded, they become
so weak that the soul, whoever comes from above, occupies them. एक होता है सिर्फ पतित बनना एक के साथ. Therefore, one is just to become impure and degraded with one. और एक होता है अनेकों के साथ पतित बनना. And another is to become impure and degraded with many. तो अनेकों के साथ जो पतित बनते हैं उनमें कमजोरी बहुत आ जाती है. Many weaknesses appear in those who become impure and degraded with many. उसको कहेंगे रावण राज. That will be called the kingdom of Ravan. ऐसे नहीं It isn't like this, कि सतयुग में राधा कृष्ण जो है वो सदैव पावन रहते हैं 16 कला संपूर्ण. that in the golden age, Radha and Krishna always remain pure, complete in 16 celestial degrees. रहते हैं क्या? Do they remain? सतयुग में जो राधा कृष्ण की आत्मा है वो 8 जन्म लेगी सतयुग में तो सदैव 16 कला संपूर्ण रहेगी क्या? The souls of Radha and Krishna who live in the golden age will take 8 births in the golden age. So, will they always remain complete in 16 celestial degrees? क्यों? Students are saying they won't. Why? The students are saying the drishti. क्योंकि जो दृष्टि का प्यार है जो मुख का प्यार है वो श्रेष्ठ इंद्रियों का प्यार ही धीमी गति से नीचे गिराता है. It is because the love of the drishti, the love of the face, that love of the elevated organs causes to fall down as well, with slow speed. विविचार में तो नहीं आते लेकिन नीचे तो गिरते हैं. They don't come into adultery, but they do fall down. त्रेता में भी In the silver age as well, श्रेष्ठ इंद्रियों का ही प्यार रहता है. there is only the love of the elevated organs. नीचे गिरते हैं सुख भोगते भोगते They fall down, experiencing happiness, लेकिन विविचार दोष न होने के कारण वो आत्माएं वहाँ भी सशक्त रहती है. but those souls remain strong there also, because there isn't the sinfulness of adultery. और जिन्होंने संगम युग में विविचार दोष को ग्रहण किया वो यहाँ फाउंडेशन पड़ जाता है उनका ज्यादा तेजी से नीचे गिरने का. And for those who assimilated the sinfulness of adultery in the confluence age, the foundation of falling down with great speed is laid here. तो कुछ आत्माएं ऐसी भी तो होंगी जो षष्ठ चक्र के आदि से लेकर के अंत तक कभी भी विचार में ना आने वाली हो. So, there will be also some souls like this, who never come into adultery from the beginning of the world cycle till the end, ये परसेंटेज में बहुत कम भी विचार में आने वाली है. or who become adulterated in a very little percentage. तो जो कम भी विचार में आती हैं उतनी ही ज्यादा सुखी रहती है. Those who become less adulterated remain happier to that extent. उनको कहते हैं भारतवासी. They are called the residents of Bharat. वो ही भारत माता शिव की शक्तियां बनती हैं. That very mother of Bharat becomes Shiv Shakti. जो जैसा होगा अपना साथी किसे बनाएगा? Whom will someone make his companion according to what he will be? चोर को साथी बनाएगा. A thief will make a thief his companion. साहूकार को साथी बनाएगा. A rich man will make a rich man his companion. शिव है एवर प्योर. Shiva is ever pure. तो किसको साथी बनाएगा? Then whom will he make his companion? जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर 84 जन्मों में ज्यादा से ज्यादा पवित्र रहते हैं, अभिविचारी बन करके रहते हैं, उनको अपनी शक्ति बनाता है. He makes his Shakti the one who on the world-like stage remains the purest during 84 births.
who remains unadulterated. इसलिए गायन है अंत का। क्या क्या अंत का गायन है? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। For this reason, there is the praise of the end. What? What is the praise of the end? The mother of Bharat, the incarnation of Shiv Shakti. This is the slogan of the end. अंत का नारा क्यों है? Why is it the slogan of the end? अंत में सहयोग देगी वो आत्मा यार। क्यों? पहले क्यों न दे? A student is saying, that soul will give the cooperation at the end. Why? Why wouldn't they give it earlier? मध्य में क्यों नहीं दिया? मध्य में दे दे। अच्छा काम तो जल्दी कर लेना चाहिए कि देर में करना चाहिए? Why didn't they give it in the middle? They should give it in the middle. Should the good work be done quickly or should it be done late? जल्दी कर लेना चाहिए। फिर Students are saying, quickly. It should be done quickly. Then? समझ में नहीं आया होगा। है? समझ में नहीं आया होगा। पवित्र बुद्धि है तो जल्दी समझ में आना चाहिए। A student is saying, they might not have understood. A student is repeating, they might not have understood. If the intellect is pure, they should understand quickly. जो अंत में किया सब कुछ किया है। जो अंत में किया सब कुछ किया। अंत में किया वो तो ठीक है। आज भी किया होगा तो अंत में भी किया होगा। Another student is saying, one who did the end did everything. That's right, that they did it in the end. They must have done something at the beginning, so they must have done something at the end as well. आदि में एक आत्मा से 84 जन्म एक आत्मा से। At the beginning, students are saying, with one soul in 84 birth. जोड़ा हुआ है वो उन्हीं आत्माओं। That soul is connected with one soul in 84 birth. नहीं, सबके लिए रुका हुआ होगा। ये 12 न्यारा फैसला अंत में ही होता है। They must have waited for everyone. No. This impartial decision takes place just at the end. कि कौन अंत तक टिका रहता है? As to whom remains firm till the end. कौन अंत तक स्थायी होकर रहते हैं? Who remains stable till the end. और कौन अंत में क्षीण हो जाते हैं? And who becomes weak at the end. जो क्षीण हो गए वो तो सहयोगी बन ही नहीं सकते। Those who became weak can't become cooperative. वो तो विनाश के कार्य में आवेंगे काम। क्या? They will prove to be useful in the work of destruction. What? इम्प्योरिटी से होता है विनाश। Destruction takes place from impurity. अपवित्रता से होता है विनाश और पवित्रता से होती है स्थापना। Destruction takes place from impurity, and establishment takes place from purity. तो जो नई दुनिया की स्थापना है वो 100% आदि में होगी या अंत में होगी? So, will the establishment of the new world take place in 100% at the beginning, or will it be at the end? अंत में ही होगी। तो अंत में जाकर के ये रिजल्ट खुलता है। It will be only at the end. So that result opens at the end. कि नंबरवार पवित्र रहने वाली आत्माएं अंत तक कौन है? Who are the souls, number-wise, remaining pure till the end? एक की बात नहीं है, नंबरवार है। It doesn't concern only one. They are number-wise. एक 100% होगी तो दूसरी 99% भी होगी। One will be in 100%. Another will be in 99.75%. 99.5% भी होगी। And another
will be in 99.50%. तो परसेंटेज का हिसाब है, उस परसेंट के हिसाब से जो आत्माएं जन्म जन्मांतर की पवित्र रहने वाली साबित होती है. So, it is the account of percentage. Their souls, who on the basis of this account of percentage prove to remain pure for many births, वो 108 आत्माएं विजय माला के दाने बनने वाली, become 108 beads of the garland of victory, Vijay-mala. वो 108 आत्माएं भारत माता शिव शक्ति अवतार, ऐसा उनका गायन है. The songs of praise for those 108 souls are like this. Bharat Mata Shiv Shakti Avatar, the mother of Bharat, the incarnation of Shiv Shakti. इसलिए खास बोला हुआ है रुद्रमाला वालों के लिए. For this reason, it was said for those of the garland of Rudra. जो बेसिक वाले हैं वो तो इन बातों को जानते ही नहीं. Those in the basic don't know these topics. रुद्रमाला वालों के लिए खास बोला हुआ है, वो ही समझते हैं. It was said particularly for those of the garland of Rudra. Only they understand. कि विजय माला का आवाहन करो. Invoke the Vijay Mala. क्या? अरे बननी है पहले रुद्रमाला. Oh, first the Rudra Mala has to be made. बाद में विजय माला बनती है. The Vijay Mala is made later on. तब रुद्रमाला के मण के विजय माला में ऐड होते हैं. And then the beads of the Rudra Mala are added to the Vijay Mala. तो रुद्रमाला का आवाहन क्यों न करें? So why not invoke the Rudra Mala? विजय माला का आवाहन क्यों करें? Why should we invoke the Vijay Mala? है? तो है. Students are saying the Rudra Mala belongs to the Sun dynasty. Yes, it does belong to the Sun dynasty. विजयमाला वालों में पवित्रता जास्ती है. A student is saying there is more purity in the Vijay Mala. सागर के बच्चे, The children of the ocean. सागर के बच्चे क्या हुए? नहीं. What happened to the children of the ocean? A student is saying the masters, the ocean of knowledge. No. सागर के बच्चे भस्म हो गए. The children of the ocean got reduced to ashes. कहते हैं सागर के बच्चे भस्म हो गए. It is said the children of the ocean got reduced to ashes. वो कचड़े को भस्म करते करते सूर्य के बच्चे जो हैं, Reducing the rubbish to ashes. The children of the sun. सूर्य कचड़े को भस्म करता है ना. The sun reduces the rubbish to ashes, doesn't it? तो कैसे भस्म करता है? How does it reduce them to ashes? ठंडा रह के भस्म करता है या गर्म होकर के भस्म करता है? Does it reduce them to ashes being cool, or does it reduce them to ashes becoming hot? तो ये सागर के बच्चे हैं. So, they are the children of the ocean जो काम विकार में भस्म हो गए, जल मरे. who reduced themselves to ashes in the vice of lust. They got dead burned. ये बीज हैं सृष्टि के. They are the seeds of the world. ये खाक में मिल जाते हैं. They get mixed with the soil. इसलिए गायन है For this reason, there is the praise. कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है. The seed gets mixed with the soil and the garden of roses is created. दाना अगर मिट्टी में न मिल जाए If the seed doesn't get mixed with the soil, तो फूल पैदा नहीं होते हैं. the flowers aren't born. पेड़ पैदा नहीं बनता होता है. The tree isn't born. फल नहीं आते हैं. The fruits don't appear. बीज अपने को धरणी में मिक्स कर देता है. The seed gets itself mixed with the earth. और धरणी है कन्याएं माताएं.
The mothers and the kanyas are the earth. कन्या माताओं में भी 2 प्रकार की धरणी है. Also among the mothers and the kanyas, there is the earth of 2 types. एक है भारत माता. One is the mother of Bharat. और एक है जगत माता. And the other is the world mother. जगत माता और जगत माता की भुजाएं भी हैं. There is the world mother and there are also the arms of the world mother. और भारत माता और भारत माता की भुजाएं भी हैं. There is the mother of Bharat and there are also the arms of the mother of Bharat. 2 तरह की धरणी है, स्वदेशी और विदेशी. There is the earth of 2 types, native and foreign. स्वदेशी धरणी में अगर बीज अपने को भस्म कर दे, राख बना दे, मिट्टी बना दे, मिट्टी में मिल जाए तो फायदा. Will there be benefit if the seed reduces itself to ashes in the native earth? If it makes itself into cinders, if it becomes itself the soil, it gets mixed itself with the soil. या विदेशी धरणी में मिल जाए तो फायदा. Or will there be benefit if it mixes itself with the foreign earth? फायदा. Students are saying, in the native earth, is there benefit? डूब जाता है. डूब जाता है तो ये रुद्रमाला के मणके बेकार है. A student is saying, the foreign lands get drowned. Then are these beads of the Rudramala useless? लेकिन भगवान बाप आते हैं But when God the Father comes, तो विदेशी बन करके आते हैं. He comes as a foreigner. हैं? कि स्वदेशी बन के आते हैं. Or does He come as a native? Students are saying, He comes as a foreigner. विदेशी बन करके आते हैं तो पहले किससे मिलते हैं? When He comes as a foreigner, whom does He meet with first? विदेशियों से मिलते हैं. उनसे कहते हैं बच्चे तुम डबल विदेशी हो. Students with foreigners. He meets with the foreigners. He tells them, children, you are double foreigners. तुम डबल विदेशी मेरे को क्यों प्रिय हो? Why are you, the double foreigners, dear to me? अरे खुद तो एवर प्योर है. He himself is ever pure. एवर प्योर है तो पवित्र को पसंद करे, पवित्र आत्माओं को पहले उठाए, पतितों को क्यों उठाता है? हैं? He is ever pure, so he should like the pure, uplift the pure souls first. Why does he uplift the impure and degraded? पवित्र आत्मा को उठाना हैं? वो तो एवर प्योर है, उनको क्या उठाना है? पवित्र को पवित्र बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है. Students are saying something. It isn't a great deal to make the pure one into pure. लेकिन पतितों को पावन बनाना वो बड़ी बात है. To make pure of the impure one is a great deal. तो जो रुद्रमाला के मणके जो खाक में मिल जाते हैं, So the beads of the Rudramala who get mixed with the soil, सागर के बच्चे भस्म हो गए, कहाँ की यादगार है? the children of the ocean got reduced to ashes. Where is it the memorial of? एक कंपिल में यादगार क्यों बन गई? हैं? A student is saying, the memorial of the confluence age. Why did it become a memorial only at Kampil? कंपिल में जाके यादगार क्यों कलकत्ते में बन जाती? Why memorial at Kampil? It could have become in Calcutta. कंपिल में यादगार क्यों बनी? Why did it become the memorial in Kampil? A student is saying, there is the seed in Kampil. है, कंपिल से वो बीज सारी सृष्टि मनुष्य सृष्टि का बीज प्रत्यक्ष होता है. That seed, the seed of the entire human world, is revealed from Kampil.
जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है प्रजापिता, वो कहाँ से प्रत्यक्ष होता है? Where from is revealed the one who is the seed of the entire human world, Prajapita? कलकत्ते से प्रत्यक्ष नहीं होता, He isn't revealed from Calcutta. कंपिल से प्रत्यक्ष होता है। He is revealed from Kampil. तो जहाँ से प्रत्यक्ष होता है वो जो भी पार्ट बजाता है उसमें सुप्रीम सोल पार्ट बजाता है, इसलिए पार्ट बजाता है। So from wherever he is revealed, whatever role he plays, it is the Supreme Soul who plays the role in him. सुप्रीम सोल उसमें प्रवेश करता है, तो कारण क्या है जो उसमें प्रवेश करके पार्ट बजाता है? मनुष्य सृष्टि का बीज। The Supreme Soul enters him. So what is the reason for entering him and playing the role? A student is saying, he is the seed of the human world. नहीं, पतितों को पावन बनाने के लिए वो पार्ट बजाता है। No, he plays the role to purify the impure. ऐसे तो ब्रह्मा में भी प्रवेश किया, He entered also Brahma. लेकिन ब्रह्मा के द्वारा सिर्फ गीता माता बनकर के सामने आया। But through Brahma, he appeared before us as the Mother Gita. ज्ञान आया हमारे सामने, लेकिन ज्ञान से पतित पावन नहीं बनता कोई। Knowledge came before us, but no one becomes pure from the impure through knowledge. क्या? What? जितने भी जानवरियत के अवतार हैं वो सब जल में रहने वाले। All the animal incarnations live in water. वो जल को आधार बनाते हैं। They take the support of water. और मनुष्य अवतार रामकृष्ण, And the human incarnations, Ram and Krishna, वो धरणी को आधार बनाते हैं। they take the support of the earth. तो जो धरणी को आधार बनाने वाले हैं वो निरहंकारी बनते हैं। So, those who make the support of the earth become egoless. धरणी माता को महत्व देते हैं, They attach importance to the Mother Earth. इसलिए निरहंकारी होने के कारण For this reason, due to being egoless, धरणी का उद्धार करने के निमित्त बनते हैं। they become instrumental in the salvation of the earth. कलयुग के अंत में सबसे ज्यादा दुर्गति किसकी होती है? Who is the most degraded at the end of the Iron Age? माताओं की दुर्गति होती है। Students are saying, the mothers. The mothers are the most degraded. पृथ्वी पर पापों का बोझ कलयुग के अंत में बहुत बढ़ जाता है। At the end of the Iron Age, the burden of sins over the earth increases very much. तो ऐसे टाइम पर जो माताओं का मान सम्मान करता है, उस मान सम्मान के आधार पर सारी सृष्टि का कल्याण होता है। So the entire world benefits on the basis of that respect given to the mothers at such time. उन माताओं में भी दो प्रकार की माताएं हैं। Also, among those mothers, there are two types. एक विदेशी और एक स्वदेशी। One foreign and the other native. या एक विदेश से प्रभावित होने वाली Or one who is influenced by the foreigners और दूसरी and the other विदेशों से प्रभावित नहीं होती, who is not influenced by the foreigners. प्रभावित होकर के अपनी पवित्रता को खंडित नहीं करती। She doesn't destroy her purity by being influenced. तो दोनों प्रकार की जो माताएं हैं So the two types of mothers, who are they? हैं तो माताएं ना। They are mothers, aren't they? धरणी तो है, They are the earth. ये तो ड्रामा बना हुआ है। क्या? This is the preordained drama. What? कि स्वर्ग होगा तो नरक भी होगा, Since there is paradise, there will be hell as well. सुख होगा दुख हो गया। तो दुख भी होगा। Since there is happiness, there will be sorrow as well. ऐसे थोड़े ही कि सुख ही सुख सृष्टि में हमेशा चलता रहे तो ड्रामा बन जाएगा। It isn't like this that the drama will be created if only happiness goes on forever in this world. सुख और दुख ये दोनों चलते हैं। Both
happiness and sorrow are in force. तो दुखदाई सृष्टि तब बनती है जब व्यभिचार बढ़ता है. When adultery increases, the world becomes sorrowful. और सुखदाई सृष्टि तब बनती है जब अव्यभिचार बनता है. And when faithfulness increases, the world becomes blissful. सवाल ये था, रावण वो रुद्रमाला के मणकों को भगवान क्यों पसंद करता है? The question was, why does God like the beads of the Rudramala? उनको राजा क्यों बनाता है? Why does he make them kings? जो जन्म जन्मांतर पवित्र रहते हैं उनको राजा नहीं बनाता, उनको रानी बनाता है. He doesn't make kings those who remain pure for many births. He makes them queens. क्या कारण है? What is the reason? वो याद की ये सब बीज है. हैं? रुद्रमाला आत्मा सब बीज है. नहीं, चलो बीज है, बीज तो वो भी है. A student is saying, they all are seeds. A student is saying, all the souls of the Rudramala are seeds. No, all right, the seeds. They are seeds as well. जो 4.5 लाख बीज के अंदर नहीं आएंगे क्या? Will they not come into the 450,000 seeds? जो विजय माला के मणके हैं वो 4.5 लाख बीजों में से नहीं है. Don't those who are the beads of the Vijay Mala belong to the 450,000 seeds? वो जड़ें हैं. A student is saying, they are the roots. Are they the roots? वो सृष्टि के बीज नहीं है. 4.5 लाख बीज तो वो भी है. Aren't they the seeds of the world? They too belong to the 450,000 seeds. बाप को पहले पहचान. हैं? बाप को पहले रुद्रमाला के मणके बाप को पहले पहचानते हैं. हाँ, विदेशी है क्या? Students are saying, they recognize the father first. The beads of the Rudramala recognize the father first. Yes, they are foreigners. What? बाप विदेशी बन करके आता है और विदेशी बच्चे बाप को पहले पहचानते हैं. क्यों पहचानते हैं पहले? The father comes as a foreigner, and the foreign children recognize the father first. Why do they recognize him first? क्योंकि बुद्धि की प्रधानता है. It is because of the superiority of the intellect. हैं? हाँ, बुद्धि की तीक्ष्णता है. ये बुद्धि की तीक्ष्णता भी कैसे आती है उनमें? What? Students are saying sharpness. Yes, the intellect is sharp. How does the sharpness of the intellect come in them? बुद्धि की तीक्ष्णता तो आज के वैज्ञानिकों में भी है. Today's scientists also have intellectual sharpness. उनको उठा लेना चाहिए. He should uplift them. उनको नहीं उठाते. He doesn't uplift them. जो पुराने बीज हैं उनको उठाते हैं. He uplifts those who are the old seeds. इसलिए कि ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है. ये पुरानी वो आत्माएं हैं. It is because they say that old is gold. They are those old souls. जो परमात्मा बाप के स्वरूप को पहचान करके उस स्वरूप की याद में जल्दी स्थिर हो जाती है. क्या? Who, having recognized the form of the Supreme Soul Father, quickly become stable in the remembrance of that form. वो बीज को पहचान लेते हैं और बीज को पहचान करके बीज रूप स्टेज जल्दी बना लेते हैं. They recognize the seed, and having recognized the seed, they make the seed stage quickly. जब बीज रूप स्टेज बनती है तो बुद्धि सात्विक रूप से तीखी हो जाती है. When the stage becomes seed-like, the intellect becomes sharp in the pure form. वो जो वैज्ञानिक हैं, साइंसदान हैं, उनकी भी बुद्धि तीखी है. Those who are scientists also have sharp intellects. सूक्ष्म बुद्धि उनकी है. They have subtle intellect. लेकिन तामसी है या सात्विकी है? तामसी बुद्धि है. But is it impure or pure? Students are saying impure. The intellect is impure. उनकी बुद्धि
विनाश के काम में आती है। Their intellect is used in the work of destruction. तीक्ष्ण बुद्धि तो है, लेकिन बाप को याद करने वाले जो बच्चे हैं वो ऐसे बाप को याद करते हैं जो एवर प्योर है। The intellect is sharp, but the children who remember the father remember such a father who is ever pure. माना प्योरिटी में, Meaning in purity, बहुत 100% इतना एवर प्योर और सृष्टि में कोई आत्मा हो ही नहीं सकती। there can't be any other soul in the world ever pure to such an extent in 100%. तो ऐसे को याद करने से उनकी आत्मा रूपी जो मन बुद्धि है वो भी सात्विक बन जाती है, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बन जाती है। Therefore, by remembering someone like this, the mind and intellect in the form of the soul also becomes pure. It becomes incorporeal, without vices and ego. इसलिए बाप अपने बच्चों से बात करते हैं क्या? For this reason, the father talks with his children. What? उसने की आत्मा आधार है, जड़ है, The soul of Krishna is a root soul. It is a root. उससे बात नहीं करते। प्रवेश तो किया उनमें, लेकिन बात उनसे नहीं करते। He doesn't talk with him. He entered him, but he doesn't talk with him. किससे बात करते हैं? अपने बच्चों से बात करते हैं। Whom is he talking with? He talks with his children. परमात्मा बाप सुप्रीम सोल के बच्चे भी सुपरमेसी की पावर वाले होंगे। The children of the Supreme Soul Father will also have the power of supremacy. साधारण पावर वाले नहीं होंगे। They won't be those having the ordinary power. तो वो पहले ज्ञान को कैच कर लेते हैं। They catch knowledge first. ज्ञान को तीक्ष्णता से कैच करते हैं तो ज्ञान का बल उनमें आ जाता है। When they catch knowledge through sharpness, the power of knowledge comes into them. भगवान के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? Which property does God have? ज्ञान सागर। कोई धन संपत्ति तो लाता नहीं है, कोई प्रॉपर्टी परम नाम से लाता नहीं है। The students are saying knowledge. He doesn't bring any wealth. He doesn't bring any property from the supreme abode. उसकी क्या प्रॉपर्टी है? जब वो आता है तो क्या प्रॉपर्टी देता है? ज्ञान की प्रॉपर्टी देता है। What is his property? What property does he give when he comes? Students are saying of knowledge. He gives the property of knowledge. तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की जो कदर करते हैं, So those who respect his property, उनकी कदर से बाप प्रसन्न होता है। the father is pleased with their respect. जैसे टीचर होता है ना, टीचर जो नॉलेज देता है उस नॉलेज को जो बच्चे ग्रहण करते हैं तो ऐसे स्टूडेंट से टीचर खुश होता है। For instance, a teacher. The teacher is happy with the children who absorb the knowledge which he gives. कि देखो ये कितना ध्यान देता है हमारी बताई हुई बात पर। Look how much attention he pays to what I say. तो ऐसे ही ये सुप्रीम सोल बाप की जो प्रॉपर्टी की कदर करते हैं उन बच्चों के ऊपर बाप बहुत प्रसन्न हो जाता है। In the same way, the father becomes very pleased with those who respect the property of the Supreme Soul Father. वो ये नहीं देखता कि ये पतित है, He doesn't see that they are impure and degraded. ये भी जानता है ये पतित कैसे बने। He knows this as well, how they became impure and degraded. ये हुजूम के हुजूम ऊपर से जो आए दूसरे धर्म की आत्माएं उनके संग के रंग से पतित बने। They became impure and degraded from the color of the company of those crowds of the souls of the other religions who came from above. इनकी दृष्टि तो फिर भी सारी दुनिया के लिए आत्मिक दृष्टि ही रहती है, लेकिन परसेंटेज। Yet their drishti for the entire world is only the spiritual drishti, but in percentage. जो और धर्म के ऊपर से आते हैं वो ज्यादा देहाभिमानी होते हैं। Are those of the other religions who come from above
more body conscious? या जो सत्युग त्रेता से उतरती हुई आत्माएं होती हैं वो ज्यादा देह अभिमानी होती हैं? Or are the souls descending since the golden and the silver ages more body conscious? मूल रूप में ज्यादा देह अभिमानी कौन सी होती है? Who is more body conscious in the original form? द्वापर कलयुग से जो उतरती है वो ज्यादा देह अभिमानी. More body conscious are those who descend since the copper and iron ages. कैसे? कब बनी देह अभिमानी? How? When did they become body conscious? संगम युग में जब बाप आया था, In the confluence age, when the father had come, तो उन्होंने ज्ञान की बातों पर ध्यान नहीं दिया, बाप को पहचाना नहीं. they didn't pay attention to the topics of knowledge. They didn't recognize the father. ठुकराते रहे. संदेश मिला, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया. They kept on rejecting him. They received the message. They let it in through one ear and out through the other. तो पहचान न होने के कारण न आत्मा की पहचान हो पाई, न सुप्रीम सोल बाप की पहचान हो पाई. Therefore, due to the lack of recognition, neither could they recognize the soul, nor could they recognize the Supreme Soul Father. तो अंत में वो पीछे रह जाते हैं ईश्वरीय पढ़ाई. So, at the end, they remain behind in the godly study. पढ़ाई में पीछे रह जाने के कारण उनमें देहभान रह जाता है. Because of remaining behind in the study, body consciousness remains in them. देहभान ज्यादा रह गया, आत्मा भान कम रहा. The consciousness of the body remained in the bigger part. The consciousness of the soul remained in the smaller part. तो जितना जितना आत्मिक स्टेज वाला होगा, उतना उतना सृष्टि के आदि में जन्म लेगा. The more soul conscious one is, the earlier he will take birth at the beginning of the world. और जितना जितना देहभान वाला होगा, उतना सृष्टि के अंत में आके जन्म लेगा. And the more body conscious one is, the later he will take birth towards the end of the world. तब तक वो आत्मा वहाँ परम धाम में पड़ी रहती. Until then, those souls will stay there in the supreme abode. कलयुग में आने वाला अपना उतना देह अभिमानी है. देह अभिमानी आत्मा. A student is asking, the souls who come in the Iron Age are so much body conscious? They are body conscious souls. और नहीं ध्यान देती हैं. परमधाम से जो भी जाते हैं, जो परमधाम से आती है तो आत्मा, लेकिन सजा खा के गई है. They do not pay attention. A student is saying, they are connected to the supreme abode when they come. From the supreme abode comes the soul. But has it gone there having suffered punishments? या अपनी पुरुषार्थ से पुरुषार्थ करके आत्मा बन के गई है, सजा खा के गई है. Or has it gone there having become a soul through its efforts, by making efforts? It has gone having suffered punishments. तो जो सजाएं खा के गई है वो ओरिजिनल आत्मा है, या जिन्होंने अपना पुरुषार्थ करके आत्मिक स्टेज धारण की है वो ओरिजिनल आत्मा है. Are those souls who went there having suffered punishments original souls? Or are those who having made their efforts assimilated the spiritual stage original souls? पुरुषार्थ करके जो गए हैं वो ओरिजिनल बाप के बच्चे हैं. Those are the original children of the Father who went there having made efforts. तो ये बीज रूप आत्माएं जो है भगवान के ज्ञान की कदर करने के कारण ये राजा बन जाती है. So these seed souls, because of respecting the knowledge given by God, become kings. है पतित. पतित भी क्यों बने? संग के रंग से पतित बने. They are impure and degraded. Why did they become impure? They became impure due to the color of the company. अरे Well, सत्युग के आदि में 4.5 लाख होते हैं. at the beginning of the Golden Age, there are 450,000.
4.5 लाख का संघ का रंग लगे तो फिर भी गनीमत हो। The color of the company of 450,000 will have an effect, yet it would not be so bad. वहां तो 4.5 लाख नहीं, Over there, not 450,000. करोड़ों आत्माएं, सैकड़ों करोड़ ऊपर से उतरते हैं और उतरते ही रहते हैं। 100,000 souls, 100,000 descend from above and keep on descending. और ही ज्यादा पतित उतरते हैं। And even more degraded ones descend. सतयुग में सोने जैसी आत्माएं उतरी, त्रेता में चांदी जैसी आत्माएं और 10 गुनी उतर पड़ी। In the golden age, the gold-like souls descend. In the silver age, 10 times more the silver-like souls descended. और द्वापर में और ज्यादा, और कलयुग में तो समार ही नहीं। And in the copper age, even more. And in the iron age, don't even ask. इतनी जो आत्माएं दुष्ट प्रकृति की उतरती है, उनके संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? So many corrupted natured souls descend. Will the color of their company have an effect or not? कलयुग में जितना मान सम्मान होता है वो आत्माएं उतना तमोप्रधान आत्माएं है क्या? A student is asking, the more the souls receive respect and prestige in the Iron Age, does it mean that they are impure to that extent? जो ऊपर से उतरती है, इनके मुकाबले जिन्होंने संग का रंग लेकर के नीचे गिरे हैं और पहले भी जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते नीचे गिरे। Those who descend from above, in comparison to these who descended down due to the color of the company, and also who previously descended down while taking rebirth and while experiencing happiness, उनके मुकाबले जो ऊपर से उतरने वाली आत्मा है, उसमें तुरंत का तुरंत आत्मिक स्थिति ज्यादा होगी या कम होगी? in comparison to them, will the soul descending from above have greater spiritual stage or lesser? आत्मिक स्थिति ज्यादा होती है, लेकिन वो आत्मिक स्थिति जल्दी ही डाउन हो जाती है। Students are saying they will have the greater one. The spiritual stage is greater, but that spiritual stage quickly goes down. और हम सृष्टि के आदि में आत्मिक स्थिति संपन्न लेकर के नीचे उतरते हैं, तो हमारी आत्मिक स्थिति लंबे समय तक बरकरार रहती है। And we descend down having taken the complete spiritual stage at the beginning of the world. Therefore, our spiritual stage is maintained for a longer time. वो जल्दी जल्दी नीचे उतरते हैं और हम धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। They fall down quickly, and we fall down slowly. तो अंतर पड़ जाता है, लेकिन संग का रंग देवताओं को सबसे जास्ती लगता है। So, there is a difference. But the color of the company has the greatest effect on the deities. भोले भाले होते हैं। They are innocent. क्या? What? देवताएं? The deities. देवताएं तो भोलेनाथ के बच्चे हैं ना? The deities are the children of the Lord of the Innocent, aren't they? शिवा जो आता है सृष्टि पर, वो भोला बनकर के आता है ना? Shiva, who comes in this world, comes as an innocent one, doesn't he? तो भोला बाप जब आता है, तो भोले बच्चों को स्वीकार कर लेते हैं। So, when the innocent father comes, he accepts the innocent children. वो अनेक जन्मों के भोले रहे हैं। They have remained innocent for many births. देखो, Look, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। Muhammad Ghori and Prithviraj Chauhan. कौन भोला था और कौन चाणा था? हैं? Who was innocent and who was cunning? ज्यादा चालाकी किसने दिखाई? Who had shown more cleverness? मोहम्मद गोरी ने कितनी चालाकी दिखाई? बार बार माफी मांगना,
और बार बार हमला कर देना। Muhammad Ghori had shown so much cleverness, asking for forgiveness again and again, attacking again and again. तो भारतवासी जो है, जो 108 बीज हैं, जो सारी दुनिया में माला के रूप में सिमरण किए जाते हैं, उन आत्माओं की जो विशेषता है, So the specialty of the residents of Bharat, who are the 108 seeds remembered in the entire world in the form of the mala, वो विशेषता आदि से लेकर के अंत तक अक्षुण्ण रहती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, remain undiminished from the beginning till the end, number-wise, according to their efforts. उनमें एक आत्मा ऐसी है जो आदि से लेकर के द्वापर के आदि से लेकर के अंत तक विदेशियों से संघर्ष करती रही. Among them, there is such a soul who keeps on clashing with the foreigners from the beginning till the end, from the beginning of the Copper Age till the end. वो आत्मा यहाँ भी पहचान में आवेगी, उसके सहयोगी भी यहाँ पहचान में आवेंगे. कैसे? That soul will be recognized here as well. His helpers will be recognized here as well. How? कैसे पहचान में आवेंगे? How will they be recognized? जो भी हो, Whoever they are, वो आदि से लेकर के अंत तक यहाँ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में संघर्ष में रहेंगे. here in the confluence age Brahmin world, they will remain in clash. संघर्ष में रहते हुए भी वो अपनी सच्चाई को छोड़ने वाले नहीं हैं. Despite being in clash, they won't give up their truth. उनकी भावना यही रहती है, सत्य की विजय हो, असत्य का नाश हो. They have this intention that the truth should win and the falsehood should be destroyed. तो अंत में जाकर के सत्य की विजय होती है और असत्य का नाश होता है. धर्म की स्थापना होती है, अधर्म का विनाश होता है. So, at the end, there is the victory of the truth and there is the destruction of falsehood. There is the establishment of the religion and there is the destruction of irreligiousness. जो भी अधर्मी है, जो भी अधर्म दुनिया में फैले हुए हैं धर्म के नाम पर, वो सब नष्ट हो जाते हैं. Whoever is unrighteous, whatever unrighteousness is spread in the world in the name of the religion, everything gets destroyed. तो रुद्रमाला के मण के एक धर्म के तो बीज है नहीं, कितने धर्मों के बीज है? So, the beads of the Rudramala are not the beads of one religion. Of how many religions are they the seeds? दुनिया में जितने धर्म फैले हुए हैं सब धर्मों के बीज हैं. They are the seeds of all the religions which are spread in the world. सुप्रीम सोल बाप आकर के किसी धर्म से ईर्ष्या देश नहीं करता. Having come, the Father, Supreme Soul, doesn't feel any hatred or aversion towards any religion. हर धर्म की आत्माओं में से श्रेष्ठ आत्माओं को चुन लेता है. He selects the elevated souls from every religion. ऐसे कोई नहीं कह सकता No one can say like this. कि हमारे धर्म को भगवान आता है, गॉड फादर आता है तो हमको धक्का मारता है. नहीं. God comes. God the Father comes and gives us a shove. No. हर धर्म की श्रेष्ठ आत्माओं को चुनता है. He selects the elevated souls from each religion. लेकिन धर्म की आत्माएं तो नंबरवार इस सृष्टि पर उतरती है ना. But the souls of the religions descend to this world number-wise, don't they? जो पहले इस सृष्टि पर आवेंगे वो ज्यादा पावरफुल और श्रेष्ठ होंगे या बाद में आने वाले ज्यादा पावरफुल और श्रेष्ठ होंगे? Will those who come to this world first be more powerful and elevated, or will those who come later be more powerful and elevated? जो पहले आते हैं वो ज्यादा पावरफुल भी होते हैं और श्रेष्ठ भी होते हैं. Students are saying those who come first, those who come at first are more powerful and are more elevated. और जो अंत में उतरते हैं वो कम पावरफुल हैं और
अपने से पहले आने वाले धर्मों के मुकाबले कम श्रेष्ठ है। फिर भी And those who descend at the end are less powerful, and in comparison with those religions which come earlier than them are less elevated. Nevertheless, कोई नाली का अवगाहन करे, कोई नाला बह रहा है और नाले का कचड़े का अवगाहन करे, तो उसमें भी कभी कभी अच्छी चीज निकल आती है नहीं? if someone searches in a gutter, a drain is flowing, and he searches among the rubbish of the drain. Does sometimes a good thing emerge from it or not? तो ऐसे ही जो अंतिम धर्म है, उन अंतिम धर्मों में से भी जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनका चयन कर लेता है। In the same way, he selects the elevated souls from even the last religions. और चुनी हुई आत्माओं को फिर संसार में चमकाता है। And then he makes the selected souls shine in the world. ये काम परमात्मा परमपिता ही कर सकता है और कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। क्यों? Only the Supreme Father, the Supreme Soul, can do this work. No other human soul can do it. Why? क्यों नहीं कर सकती? Why cannot they do it? क्योंकि सब में पार्शियलिटी भरी हुई है। It is because partiality is in everyone. सुप्रीम सोल में किसी प्रकार की कोई पार्शियलिटी नहीं है। In the Supreme Soul, there isn't any kind of partiality towards anyone. ये पार्शियलिटी की पावर जो है वो दूसरे धर्म पिताओं में है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक। This power of partiality is in other religious fathers, Abraham, Buddha, Christ, Guru Nanak. ये कोई अच्छी पावर नहीं है। It isn't a good power. आत्मा आत्मा भाई भाई होने चाहिए। There should be the attitude, soul, brother. It means the souls are brothers for each other. भाई चाहे छोटा हो और भाई चाहे बड़ा हो। The brother may be younger or the brother may be elder. बाप का वर्षे का हक जो है वो सबको बराबर मिलना चाहिए। Should all receive equally the right to the inheritance of the father? या कम जास्ती मिलना चाहिए? बराबर मिलना चाहिए। Or should some receive more, some less? Students are saying equally. They should receive equally. फिर अंतर क्यों पड़ जाता है? So why is the difference? मिलता तो सबको बराबर है। All receive equally. परंपरा बनी आई है। The tradition has been formed. एक बाप के 4 बच्चे होंगे तो चारों बच्चों में बराबर प्रॉपर्टी बांटता है। If one father has 4 children, the property is shared among 4 children equally. फिर अंतर क्यों पड़ जाता है? So why is there a difference? हैं? अपने अपने बुद्धि से जो बड़ा बच्चा है, ज्यादा बुद्धि जो पहले आकर के पैदा हुआ है, वो अपने पूर्वजन्म की प्रारब्ध लेकर के आता है। The elder child, the child who is born first, comes having taken the results of deeds in the previous birth. और पहले जन्म लेता है और पहले जन्म लेने के कारण जो प्योरिटी की पावर है वो माँ बाप से पहले ले लेता है। And is born first. Because of being born first, he takes first the power of purity from the mother and the father. दूसरे बच्चे उतनी प्योरिटी की पावर नहीं ले पाते। The other children can't take so much power of purity. यहाँ भी ऐसे इस बात का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? The same is here. Where is the foundation of this matter laid? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में यहाँ फाउंडेशन पड़ रहा है। The foundation is laid here in the confluenced aged world of the Brahmins. बाप जब सुप्रीम सोल आते हैं, वो जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान का तंत्र क्या है? What is the essence of knowledge that the Supreme Soul Father gives when he comes? जब विनाश हो जाएगा, विनाश का टाइम आवेगा, अंत समय में ये ज्ञान तो नहीं रहेगा। This knowledge, it won't remain when destruction takes place.
when the time of destruction comes at the end, ज्ञान का विस्तार रहेगा क्या? will the expansion of knowledge remain? नहीं रहेगा. फिर क्या रहेगा? It won't remain. Then what will remain? आत्म की स्थिति रह जाएगी. तो मुख्य फाउंडेशन की बात यही आत्म की स्थिति है. So, just this spiritual stage is the main thing of the foundation. अमृत वेले उठ करके और कोई बात याद नहीं करना. क्या करना? One should get up at the Amrit Vela and one must not remember anything else. What should one remember? एक बाप को बाप नहीं याद आएगा पहले. A student is saying, one father. At first, the remembrance of the father won't come. Students are saying, the soul. देवभान में आएंगे. कल हमने इतनी सेवा की, हमने इतना ज्ञान सुनाया. If the body consciousness comes, yesterday I did so much service. I narrated so much knowledge. जिसको ज्ञान सुनाया उसको कैसे कैसे पॉइंट सुना करके हमने डाउन किया. I mentioned such points to that one to whom I was narrating knowledge that I made him feel down. तो देवान आया या आत्मा अभिमान आया? देवान आ गया. So, did body consciousness come or did soul consciousness come? Body consciousness came. फाउंडेशन ही देवान का पड़ गया. The foundation of body consciousness was laid. अरे हमने क्या सुनाया? हम तो तमो प्रधान आत्मा है. Well, what did we say? We are Tamopradhan souls. इस कलयुग के अंत में हम आत्मा कैसी है अभी? हम तो तमो प्रधान है. Now, at the end of this Iron Age, what are we souls like? We are Tamopradhan. यज्ञ में जब बाप ने हमको उठाया था तब फिर भी हमारे अंदर सात्विकता थी. और अभी तो When the Father picked us up in the yagya, still there was goodness and purity in us. And now? अभी तो ज्यों ज्यों ज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं और ही नीचे उतरते चले जाते हैं संग के रंग में. Now, as we go ahead in knowledge, we keep falling down more and more in the color of the company. तो हम तो तमो प्रधान आत्मा शूटिंग के हिसाब से भी बने पड़े. So also from the account of the shooting, we became impure souls. और पुरानी आत्मा होने के कारण वैसे भी पुराने 84 जन्म लेने वाले. And because of being old souls, we are old anyway, those who take 84 births. तो तमो प्रधान आत्मा सर्विस करेगी या डिसर्विस करेगी? So, will an impure soul do service or will it do disservice? तमो प्रधान आत्मा तो डिसर्विस ही करती है. हाँ, ये बात जरूर है. An impure soul does only disservice. Yes, this is sure that कि जो जितने ओल्ड होते हैं उनके अंदर ये विशेषता होती है सच्चाई की. क्या? to the extent one is old, he has that specialty of the truth inside. What? कि हम ज्यादा से ज्यादा आत्माओं का कल्याण करें, हिम्मत करते हैं. We would provide for the well-being of maximum souls. They master courage. कोई भी आत्मा को समझाने की हिम्मत करते हैं. तो हिम्मत है बच्चे तो मदद ही पाओ. They master courage to explain to any soul. The Father helps when the children are courageous. ये हिम्मत करने की जो बात है वो बाप के पुराने बच्चों में. This mastering courage is in the old children of the Father. हिम्मत करते हैं तो बाप जानते हैं कि ये पतित आत्मा है. They master courage, and the Father knows that this is an impure soul. हिम्मत तो कर रही है लेकिन पतित आत्मा होने की वजह से ये अपने पतित पने का संग का रंग ज्यादा लगाएगी. It is mastering courage, but for the reason of being an impure soul, it will exert more influence of its impurity and degradation. तो उसमें प्रवेश कर जाते हैं. Therefore, he enters them. बंदर बुद्धि है. They have the monkey intellect. बंदर क्या करता है? What does the monkey do? बंदर को कभी ध्यान से बैठ के देखो क्या करता है.
Sit some time and look carefully at a monkey. What does it do? कहीं बैठा होगा, ध्यान लगा के बैठेगा क्या? If it is sitting somewhere, will it sit in meditation? क्या करेगा? इधर देखा, इधर देखा. उसकी चंचलता बहुत प्रसिद्ध है. What will it do? It will look here, it will look there. Baba is copying the monkey's behavior. Its instability is very well known. मन जो है बहुत ही चंचल होता है. The mind is very unstable. तो ऐसे ही बाप जानते हैं कि इनकी मनोवृत्ति रूपी आत्मा तो ये बंदर संप्रदाय है, राम की सेना है. So, in the same way, the Father knows that their soul in the form of the mind and intellect, it is the community of monkeys, the army of Ram. यही सेना मिलती है जन्म जन्मांतर बाप को अंतिम जन्म में आकर के. The Father receives this army for many births. When he comes in the last birth, तो फिर भी हिम्मत बहुत होती है. कितनी हिम्मत होती है? बंदर एकदम पेड़ की चोटी पे जाके बैठे. but yet they have a lot of courage. How much courage do they have? The monkey runs and sits on the top of the tree in an instant. अगर पहाड़ है तो पहाड़ पर भी चढ़ता ही चला जाएगा, चढ़ता ही चला जाएगा. If there is a mountain, it will keep on climbing the mountain and keep on climbing. माने ऊंची चाड़ी पहनने की हिम्मत बहुत है. Meaning, it has a lot of courage to climb very high. तो हिम्मते बच्चे मदद बाप. बाप आकर उन बच्चों का मददगार बन जाता है. The Father helps when the children are courageous. The Father comes and becomes the helper of those children. विजय माला वालों का क्यों नहीं आकर के ज्ञान सुनाता पहले? Why doesn't he come and narrate knowledge to the Vijay Mala first? उनका मददगार क्यों नहीं बनता? वो हिम्मत ही नहीं है. Why doesn't he become their helper? They don't have courage at all. दादियों ने पकड़ लिया जैसे बकरी है ना. Daddies caught them, just like the goats. तो बकरी का जो कान पकड़ लेगा तो जैसे कान पकड़ने वाला जहाँ ले जाएगा वहाँ चली जाएगी. Whoever catches the goat by its ear, it will go wherever the one who catches its ear takes it. इसलिए त्रिमूर्ति में बोला है, त्रिमूर्ति में वास्तव में एक बकरी है, एक घोड़ा है, एक शेर है. For this reason, it was said in the Trimurti. In reality, in the Trimurti, there is one goat, there is one horse, one lion. तो विष्णु का पार्ट, बकरी का पार्ट. So, the role of Vishnu is the role of the goat. एक बकरी नहीं है. There isn't one goat. क्या? What? विष्णु के पार्ट में एक बकरी नहीं है. There isn't one goat in the role of Vishnu. विष्णु के पार्ट में कितनी भुजाएं हैं? How many arms are there in the role of Vishnu? 4 भुजाएं हैं. 4 भुजाओं में एक बकरी है. There are 4 arms. Among 4 arms, there is one she-goat या कहें एक बकरा. and there is one he-goat. बकरा को बकरी को बात तो एक ही हो जाती है. The question of the she-goat and the he-goat is the same. लेकिन उनमें खासियत होती है, एक जहाँ जाएगी दूसरी वहीं जाएगी. But there is a characteristic feature in them. The others will go to the same place where one will go. एक रुद्रमाला की, क्योंकि रुद्रमाला में तो उनके भी बीज हैं. किनके? One belongs to the Rudramala because their seed is in the Rudramala. Whose? किनके बीज हैं? हाँ, विजय माला के बीज भी कहाँ बैठे हैं? रुद्रमाला. Whose seed? A student is saying of the Vijay Mala. Yes. Where do these seeds of Vijay Mala sit? In the Rudramala. अगर वो बकरी का पार्ट में जाते हैं तो उनके बीज भी रुद्रमाला में. Since that one plays the role of the she-goat, so does its seed in the Rudramala.
रुद्रमाला में जो उनका बीज है वो एक भुजा और विजयमाला का बीज एक भुजा, ये दो भुजाएं तो विष्णु की ये हो गई. One arm is the seed in the Rudramala and one arm the seed of the Vijayamala. They became two arms of Vishnu. वो विष्णु की दो भुजाएं हैं. They are two arms of Vishnu. क्योंकि विष्णु का तबक्का ऊपर का है और नीचे की दो भुजाएं और हैं. कौन सी? It is because the rank of Vishnu is higher, and there are two more, the lower arms, which? जिनको कहा ब्रह्मा और सरस्वती. Those who were called Brahma and Saraswati. क्या? What? ब्रह्मा और सरस्वती. Brahma and Saraswati, जिनको बताया पार्ट घोड़े का. for whom it was said the role of the horse. मन रूपी घोड़ा. The horse in the form of the mind. ये घोड़े का पार्ट जो है वो बहुत चंचलता दिखाता है. This role of the horse shows a lot of instability. अभी भी Even now, ब्रह्मा की बुद्धि में ये बात नहीं बैठ रही है कि गीता का भगवान कौन है. this question, who is the god of Gita, isn't getting into the intellect of Brahma. क्यों नहीं बैठ रही है? Why isn't it getting into it? क्योंकि मन के ऊपर अभी बुद्धि का कंट्रोल नहीं हुआ है. It's because until now, the intellect doesn't have control over the mind. बुद्धि रूपी जो तीसरा नेत्र है, The third eye in the form of the intellect. वो तीसरा नेत्र वाली आत्मा अभी मन रूपी घोड़ा कहो, बैल कहो, उसके ऊपर हाई जंप लगा करके उसने सवारी नहीं की. That third-eyed soul hasn't taken a high jump and ridden on that mind-like horse, or let's call it bullock. जब हाई जंप लगा करके उस मन रूपी ब्रह्मा के ऊपर भी सवारी कर लेता है तो ब्रह्मा सो विष्णु एक सेकंड में बन जाता है. When it takes a high jump and rides also on that Brahma in that form of the mind, Brahma becomes Vishnu in 1 second. तो ये चार आत्माएं हैं, वो तो हैं भुजाएं विष्णु की. So there are 4 souls. They are the arms of Vishnu. लेकिन उन भुजाओं को चलाने वाला भी तो चाहिए. But the one who moves the arms is also required. वो चलाने वाला वो है राम वाली आत्मा. The one who moves them is the soul of Ram. शिव उसको तैयार करता है. Shiva prepares him. तैयार कैसे करता है? हिम्मत के आधार. How does he prepare him? On the basis of courage. हिम्मते बच्चे हिम्मत करेंगे तो बाप मदद करेगा. The father helps when the children are courageous. If they muster courage, the father will help. हिम्मत ही नहीं करेंगे तो मदद नहीं करेगा. कोई तो ऐसे घर में बैठे रहते हैं, ईश्वरी सेवा में जाने की रुचि ही नहीं होती. If they don't master courage, he won't help them. Some sit at home and they aren't even interested in the godly service. कोई ऐसे होते हैं ज्ञान में आए और बस अब तो हमें और कुछ नहीं करना. Some are such that they came to the knowledge and now that's it. Now we don't have to do anything. जो करना था सो कर लिया. 63 जन्म बहुत किया. What had to be done, we have done it. We had done a lot in 63 births. अब हमें कुछ नहीं करना है. अब तो जो कुछ बाप का काम है वो ही करना. Now we don't have to do anything. Now whatever is the work of the Father, we have to do only this. तो हिम्मत जो करते हैं उनको बाप मदद देता है. So the Father helps those who are courageous. 63 जन्म भी ऐसे ही हुआ है. It was like this during 63 births as well. कुछ आत्माओं ने विधर्मियों से टक्कर लेने की बहुत हिम्मत की. Some souls displayed a lot of courage in clashing with the Vidharmis. Vidharmi, the souls of the religion which are in opposition to the Father's religion. और बौद्धियों ने क्या कर दिया? And what did the Buddhists do? बौद्धि बहुत पावरफुल थे. The Buddhists were very powerful. लेकिन हिम्मत
हिम्मत नहीं कर सके। but they couldn't master courage. जहाँ उन्होंने हमला किया, तलवार निकाली, वो मरने के डर से हाथ ऊपर उठा दिए। As soon as those attacked drew their swords, they, it means Buddhists, raised their hands in fear of death. अच्छा, ले जाओ बीवी बाल बच्चे, तुम ले जाओ। All right, take them and go. Take the wives and the children and go away. सौंप दिए आराम से। They handed them over easily. तो जो सूर्यवंशी बच्चे हैं बाप के, So the father's children, the Sun dynasty, वो खुद जलते हैं और दूसरों को जलाते हैं। burn themselves and burn the others, माने रावण को जलाते हैं। meaning they burn Ravan, रावण का जो काम क्रोध लोभ मोह कचड़ा है, the rubbish of Ravan, lust, anger, greed, attachment, ego, जो खाद पड़ी हुई है लोहे की, तांबे की, चांदी की, वो सारी खाद जलाते हैं। they burn all this contamination in the form of iron, copper, silver. और जलाने के टाइम वो खुद गर्म होते हैं कि नहीं होते हैं? And do they themselves get heated up while burning or not? खुद भी गर्म होते हैं। They themselves also become hot. इतना गर्म होते हैं, गर्म होते 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 खुद भी खाक हो जाते हैं। They become so hot that becoming hot and hot, they themselves become ashes. यज्ञ के आदि में भी वो आत्माएं थी। Those souls were at the beginning of the yajna too. विनाश ज्वाला कब प्रज्वलित हुई? When was the flame of destruction ignited? यज्ञ के आदि से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। The flame of destruction was ignited since the very beginning of the yajna. सारे ही चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी एक तरफ हो गए। All from the Moon dynasty, the Islam dynasty, the Buddhist dynasty were on one side, और चंद्रवंशी सूर्यवंशी आत्मा एक तरफ हो गई, मुट्ठ भर। and the souls of the Sun dynasty were on one side, a handful. आदि में भी झगड़ा चला था, और अभी भी ये झगड़ा चल रहा है। सामने खड़ा हुआ है। The quarrel went on at the beginning too, and right now this quarrel stands just ahead. ऐसे नहीं कि बेसिक के अंदर ही जो इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन है वो ही दुश्मनी कर रहे हैं, नहीं। It isn't like this that only the Islamic followers, the Buddhists, the Christians who are in the basic become enemies. No. एडवांस पार्टी में जो बीज रूप आत्माओं में जो दूसरे धर्म के छिलके वाले हैं, Those with the cover of the other religions, among the seed souls in the advanced party, वो भी विरोध कर रहे हैं। are also in opposition. किनका? To whom? बाप और बाप के उन्हीं असली बच्चों का जो सूर्यवंशी थे। Students are saying to the father, and those real children who were the Sun dynasty. लेकिन वो ज्ञान की अग्नि ऐसी है, योगाग्नि का रूप धारण करती है। But the fire of knowledge is such that it takes the form of the yoga fire. और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनको भस्म कर And reduces to ashes lust, anger, greed, attachment, and ego. भस्म करती है तो नई दुनिया प्रत्यक्ष होती है। When it reduces them to ashes, the new world will be revealed. भस्म न करे तो नई दुनिया भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। If it doesn't reduce them to ashes, the new world won't be revealed either.